Now, inside that, let's write one function connect to MongoDB. ऐसा एक function लिखते हैं. Now, inside that function, first of all, okay, let's read environment variables. From .env file. So for that purpose, we say .env.config. ये method हम call करते. Okay, now those all environment variables are read and loaded in process.env. After that, now establish database connection with MongoDB. Okay, so here say mongoose dot connect, a ready-made method, and inside that now we will say process.env dot okay db underscore URL. Now what is this db underscore URL? ये देखो इधर, ये db underscore URL ये property जिसका वैल्यू ये पूरा है. ओके, और ये asynchronous कॉल होता है, तो asynchronous कॉल, asynchronously. ओके, हाँ, then dot then बोलो इधर, connect के बाद बोलो dot then, and here we will say simply console.log. Okay, db connected to database, MongoDB database, connected to MongoDB. ऐसा लिख. And then if there is any error that we can handle here, the catch. To this catch again pass error object and console. Console.error error. So just a minute, sir. Okay, sir. Okay. Should I proceed? Yes, sir. Okay. So now here we completed the function. Now we need to export this function. Export. Okay, function. So module dot exports is equal to connect to MongoDB.
Okay, sir. Hmm. Now, in the Express Mongo app folder, let's create server. Express Mongo server .js. ये Express Mongo app के अंदर करो. Now const express is equal to require single quote express. Then import that function const connect to MongoDB is equal to require, and we'll say dot slash dbconfig slash dbconnected. Then let's create app. This app is equal to express. Okay. And now after this, we'll call this function connect to MongoDB. Then app.listen, app.listen, and to that we'll say process dot env dot port, comma, and we'll say here console dot log. Okay. Express HTTP web server start and listening on port. Okay. 4000. We port का वैल्यू भी ना हम एक काम कर दे इधर backtick दे दे. Instead of double quote, use backtick. And यहाँ हम बोलेंगे port dollar process dot env dot port में capital. So we will check first of whether connection to database is established or not. Sir, just a minute. Yes, please. Done.
Just a minute. Now done, sir. Okay. Let's start this file on terminal. Say cd express mongo app, and you can use node और node1. तो node यूज करते हैं express mongo server. हमें सिर्फ ये चेक करना है कि connected to mongodb आता है क्या, तो ये हो रहा है क्या. If this message comes, then whatever the code we have written, that is logically correct. हो रहा है, establish हो रहा है connection like this. पहले तो express http web server started and listening on port 4000 and now connected to mongodb. Sir, we will confirm you. Hmm? We are trying to connect. We will confirm you. Your case is fine. What about others? Yes, sir. Done. That's okay. Done. सर मेरे को उसके साथ कुछ एरर भी आ रहा है. Sir, कनेक्ट कैसा बताएं? There is some error. Share screen. Yes. Share your screen. Zoom करो ना. URL दिखाओ, URL db URL. .env फाइल है ना, उसके अंदर जो कोड है. हाँ, ये जरा जूम करो. MongoDB :/127.0 :270/4000 और वो एरर दिखाओ.
कनेक्शन रिफ्यूज्ड, आपकी सर्विस बंद हो गई, वो उस दिन हुआ था ना वैसे हुआ। वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके स्टार्ट करो ना, मोंगो सर्विस, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। एक काम करो, आप पहले मोंगोडीबी कंपास ओपन करो, वहां से पता लग जाएगा वहां से कनेक्ट होता है क्या नहीं। कंपास ओपन करो भाई, मोंगोडीबी कंपास। हाँ, यहाँ से कनेक्ट करके देखो, अगर यहाँ भी कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है तो यानी कि वो सर्विस बंद हो गया। मोंगो, पहले हम वो ट्राई करते कंपास। नहीं हो रहा है, यानी कि वो सर्विस बंद हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, स्टार्ट करो मोंगोडीबी सर्विस। वो हम कॉपी करते हैं ना। करेक्ट। यहाँ वो पाथ कॉपी करना पड़ेगा ना, वो सी ड्राइव में जहाँ पे आपने मोंगोडीबी का वो अनजिप करके रखा है ना फाइल। करेक्ट। करेक्ट। किया क्या नहीं इस्टेब्लिश, मोंगो एसएच नहीं भाई, ये नहीं रे। हाँ हो गया ना फिर, वो टर्मिनल पे मत करो, इधर जाओ, अभी आपका जो प्रोग्राम कंपास पे जाओ, कंपास, कंपास से कनेक्ट होता है। टर्मिनल की जरूरत नहीं है, वो टर्मिनल मिनिमाइज करो और कंपास से कनेक्ट करके देखो। यहाँ से कनेक्ट हुआ तो वहां से कनेक्ट हो गए। ठीक है, अभी वहां से अपना प्रोग्राम है ना, वीएस कोड, वीएस कोड में जाओ। हाँ, ये प्रोग्राम फिर से रिस्टार्ट करो, कंट्रोल सी बोलो इधर। हाँ, नाउ रिस्टार्ट। डन डन। So everybody is getting this output connected to MongoDB database, right? Yes, sir. Okay, fine. Now we are ready to perform database operations. So this is very important step, how to connect to MongoDB server. Now let's understand what is next. The connection to installation. Now see, as already we know, in MongoDB, we always store the data in the form of document in the JSON format. Okay, so and every document has some structure. So whenever we are trying to establish connection with MongoDB and we want to perform, okay, some database activity, database operation like insert, update, delete. So first of all, we should have here document structure ready. For that purpose, okay, Mongoose API, which we have already installed in our Express app. So it has one concept called schema. Schema defines the structure of MongoDB document. Okay, the schema defines the structure of MongoDB document that is stored in a MongoDB collection. And this schema also provides an interface for performing database operations, CRUD operations like create, okay, read, update, delete operations. Okay, so how to create a schema? By specifying the structure, there is a one built-in method in Mongoose of which name is schema. So we need to use actually this, okay, schema. Actually, it is not a method, it is a constructor. So ये constructor call करना पड़ेगा by creating the object like this.
So then const schema is equal to new mongoose dot schema. And to the schema constructor, we need to pass one anonymous object. And here we need to specify the properties. Okay. Property names can be any. Okay. Property one, property two, property. And every property has some type, data type. And whether that property should have a value or not, required true or not. Similarly, certain property can have default value like this mandatory or not. So this you can specify. Okay. And then if you really don't want to provide other constant like require, default, then you can simply specify data type. So means whatever the MongoDB document we have in the MongoDB server, or suppose from program, which is Express program, which we are writing. So you want to insert new MongoDB document with some structure. So this structure we are defining. Okay. So see here, this is example. Means for example, I create person schema.js. So first of all, I need to import mongoose and now say const your schema object name equal to new mongoose.schema and say I pass here structure of person, name, age, gender. So name, type, string, required true. Means name is mandatory. Age, type, number, default 0. Means if the age is not inserted, then the default value will be 0 inserted. Gender string. Okay, here I did not mention any constraint. So these are various ways. And now export this schema object. After creating schema, which is defining the structure of MongoDB document, okay, we need to create using schema model. Okay, so model is a schema-based class, okay, that allows you to interact with the MongoDB collection. And to perform database operations, we require model object. So model object is created by calling the function model. Okay, like this, mongoose.mSmallModel. And here we need to pass model object name, okay, and that model we create with the help of schema. And here the reference to that object is written. For example, in our previous case, we created person schema. So here I am saying const p capital person, okay, equal to mongoose.model. And now here, whatever the model name you pass, it should be singular. It should be singular. Okay, we suppose you have collection name products, then your model name will be product only. If your collection name is customers, then here model name will be customer. Right now, if you say person, you will find कि क्या collection बनता है. Actually, it will automatically create a collection. Okay, using this model, it will create a collection. Okay, so this part we have to do, and after that, now we can start performing operation. Okay, so now we are ready to go. So now what we'll do, inside this Express Mongo app folder, let's create subfolder model. And now inside model folder, we will create p small person underscore model dot js. इसके अंदर ही हम स्कीमा तैयार करेंगे. अभी आपका सर्वर है ना, वो स्टॉप कर दो, कंट्रोल से बोल दो टर्मिनल पे. So now here, first of all, please import mongoose equal to require in single quote mongoose. So now let's create schema which defines structure of structure MongoDB document. So now how to do the const person schema equal to new mongoose dot s capital schema.
तो ये फंक्शन rather than function constructor बोलते हैं इसको. And inside that pass opening closing curly brace, and here I will say name of person and type string, S capital string. These are mongoose data type string. Then I want name, okay, mandatory required true, comma. Then I will say age. The age I want to be number type. So ये जो n capital number आप बोल रहे हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट टाइप नहीं है, ये mongoose टाइप. And इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा. आपको जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देना है दे सकते हो. Okay, like this. And then I will say city of string type. So this is how we create a schema. So this is very important point to be understood whenever we deal with MongoDB using Express. तो आपको ये स्टेप क्रिएट करना पड़ेगा. पहले तो आपने वो कनेक्टिविटी वाला कोड लिखा, फिर हर एक डॉक्यूमेंट के लिए ओके आपको ये स्कीमा बनाना पड़ेगा. तो बेटर व्हाट यू शुड डू, द वे हमने यहाँ पर्सन मॉडल किया वैसे अगर प्रोडक्ट के लिए करना है तो प्रोडक्ट मॉडल, कस्टमर के लिए का तो हर एक के लिए आप अलग अलग ओके मॉडल फाइल्स बनाओ. So now after that using schema create model, create mongoose model using schema. So cons p capital person equal to mongoose dot m small model, and here जो first parameter है वो model name होगा, okay, singular में, and then person schema using which you want to create line, and then my friend export model object, mongoose model object. So model dot export is equal to p capital person. Okay. Excuse me, sir. हाँ. Yeah, and we are giving name as a type string and required true. So for city also we can give type string and required true or false. Yes, yes. You can do that if you want. Okay.
Done. Yes, sir. Done, everybody. Yes, sir. Okay, fine. Now go to Express Mongo server, and here please import your model. Once P capital person equal to require dot slash model slash person model. Correct. Now we want to, using this model, we want to insert new MongoDB document, new object. We want to insert JS object, JavaScript person model object as MongoDB document. SI is coming. So now how P capital person is a once P small person is a new person. So जो model class आपने बनाया using that and insert that, now it's a name, whatever name you like to have. For example, I say Dinesh Kumar, then age 23, city, okay, Pune, like. Now how to insert? Actually insert वाला part नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हम क्रिएट कर रहे हैं मॉडल ऑब्जेक्ट और इधर हम इंसर्ट करेंगे लाइक दिस. So now how to insert p small person dot save. और ये जो कॉल है ये असिंक्रोनस कॉल होता है. ओके, तो यहाँ हम बोलेंगे डॉट देन में हम console dot log new person document, new person inserted or added document will dot catch error object console dot error like this. और ऊपर जो हम क्रिएट कर रहे हैं create model object और इसको इंसर्ट.
ओके ओके चलो का Yes, sir. Done. Yes, sir. तो इसको रन करते हैं हम करो ना रन अभी आप रन करो ओके और देखो इंसर्ट होता है क्या और ये मैसेज आता है क्या न्यू पर्सन डॉक्यूमेंट इंसर्टेड अभी मैं आपके डेटाबेस के साथ करूंगा यानी कि जो आपके बैच के लिए मैंने डेटाबेस बनाया था ना वो यानी कि मोंगोडीबी कंपास ओपन करता हूँ कनेक्ट हाँ तो ये नोड जेएस 25A 131 DCH इसके साथ आप माई डीबी के साथ तो मैं डॉट env में चेंज करता हूँ यहाँ बोलता हूँ नोड जेएस 25A Yes, sir. हो रहा 131 है. DCH हाँ अभी कंपास में देखो ना ये कंपास में देखो वो आ रहा है हाँ कलेक्शन सर, का people कलेक्शन करके आ रहा है. हाँ. हाँ कलेक्शन का नाम पीपल करके आया ना नोड जेएस Yes, sir. 25 131 DCH ठीक है चेक एवरीबॉडी अभी मैं फिर से ये स्टार्ट कर न्यू पर्सन डॉक्यूमेंट इंसर्टेड तो सी आपके मॉडल का नेम क्या है मॉडल का नेम क्या है Person. पर्सन Person. लेकिन यहाँ कलेक्शन का नेम People क्या है करके. पीपल People करके. हाँ तो ये मोंगोडीबी सर्वर इंटरनली जो भी मॉडल होता है ना उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट और ये देखो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ नेम दिनेश कुमार H23 सिटी एंड सो फाइन वर्किंग दिस एनीबॉडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो देयरफॉर आई वाज टेलिंग यू कि जो भी मॉडल नेम होता है ओके वो सिंगुलर में होना चाहिए यानी कि आपने ये जो पर्सन मॉडल में ये जो मॉडल नेम दिया ना इधर मॉडल मेथड के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर सिंगल कोट में पेयर ऑफ सिंगल कोट दिस शुड बी सिंगुलर नेम ऑटोमेटिकली देखो मेनी पीपल मींस सॉरी मेनी पर्संस मींस पीपल तो दिस इज डन बाय मोंगोडीबी इंटरनली तो ये मोंगोस एपीआई का कमाल है ओके फाइन तो नाउ कैन वी इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ये अगर हो गया सबका हो Yes. सक्सेसफुल तो दिस इज असिंक्रोनस वे अभी एक काम करो वी वांट टू इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट सो ये कमिट में डाल कोड एक डॉक्यूमेंट का एंड नाउ we'll say inserting multiple model object as MongoDB documents तो पी कैपिटल पर्सन यानी कि आपका जो मॉडल क्लास है डॉट इसके अंदर मेथड्स है इंसर्ट मिनी ये देखो ये मेथड दिखाई दे रहा है इज इट शोइंग मेथड लाइक दिस इंसर्ट मिनी एंड हियर वी पास अरे तो अरे के अंदर ये सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट तो नेम मैं बोलता हूँ ओके नलिनी पाटिल इसका एज सपोज आई से 22 ओके सिटी मुंबई तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया कॉमा दूसरा डॉक्यूमेंट अगेन नेम मैंडेटरी है ना नेम ओके सपोज आई से सेजल
करना। इसका एज नहीं देते तो एज विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू। सिटी मैं बोलता हूँ ओके इंदौर। थर्ड डॉक्यूमेंट अगेन नेम ओके सूरज मेहता। इसका भी एज नहीं देते हम। सिटी तो मैं बोलता हूँ हैदराबाद। Can you please up scroll? Just a minute. हम्म, ओके In some records, age is optional, no? Means it is not mentioned. करेक्ट Okay. because we have mentioned not default 0 right. So now अभी run मत करो हाँ. We this is our synchronous call and then here in the then we say console dot log and we'll say documents inserted successful and then dot catch and if there is an error please handle that console dot error. Now you please rerun it.
ये फिर से रीरन करो. Nodemon, don't use Nodemon, use node only. Done. वर्क हो रहा है. अभी रन करो आप. Sir, executed multiple records inserted, sir. वेरी गुड. तो ये कंट्रोल सी और फिर से रिस्टार्ट करो. एंड से डॉक्यूमेंट्स इंसर्टेड. अभी कंपास में जाके रिफ्रेश करो इधर. ये रिफ्रेश बटन है, देखो इधर. जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन एंड ये देखो. तो आप देखो जहां एज आपने डाला नहीं वो डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है 0. लाइक अरे देखो एज 0 लाइक. करेक्ट. Yes, sir. तो दिस हाउ वी डील विद. अभी एक बार फिर 3 डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट करते हैं, यानी कि इधर ही ना आप डेटा चेंज करो थोड़ा सा. और या मैं बोलता हूँ राघव पटेल, एज समुदाय से 35, सिटी समुदाय से बेंगलुरु. देन हियर टीना, ओके, कुलकर्णी. और यहाँ सिटी बोलता हूँ दिल्ली. एज एज डाल दो इसका. एज ओके 30, तो जो भी वैल्यू डाल. देन सूरज मेहता. तो ये ऐसे रमेश पवार, इनका भी एज डाल देते हैं. एज 45, सिटी कोलकाता. ठीक है. तो फिर से ऐसे डेटा चेंज करके आप इंसर्ट करो. कंट्रोल से बोलो इधर. आपको जो भी वैल्यूज डालना है डाल सकते हो. और हम यहाँ रिफ्रेश. तो इतने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रिफ्रेश किया अभी. 7 डॉक्यूमेंट हो गए. सो नाउ वी हैव टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स. तो जब आप ये एक्सप्रेस और मोंगोस एपीआई यूज करके कोई भी नया डेटा इंसर्ट करते हो तो एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है, वर्जन प्रॉपर्टी. ये डबल हाइपन वी, सॉरी डबल अंडरस्कोर वी, वर्जन 0. ऐसा ये मोंगोस एपीआई के थ्रू ऐड हो रहा है. फाइन. तो नाउ multiple documents we can insert.
So actually, that underscore v is some unique value or it is some fixed value version of that document. version of document. Okay, that is fixed, no? हाँ Okay. हाँ प्रॉपर्टी फिक्स लेकिन वैल्यू चेंज हो सकता है जैसे Okay. फाइन तो नाउ ये इंसर्ट वाला हो गया अभी हम फाइंड करके देखें फाइंड इसको कमेंट में डालो तो सी टुडे वी आर परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशंस अभी फाइंड में मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ लाइक दिस हाँ नाउ हियर let's get our MongoDB document as JS objects, model object. Okay. Now P capital person dot find. ये method है find. Okay. And to the find method, right now we will not pass anything, any query. So through the find method, you can pass query object, but we want all documents. Again say dot then और जो भी डेटा रिटर्न होगा इस प्लेन में आएगा डेटा वेरिएबल और हम वो कंसोल पे प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा like this. Then dot catch error console dot error. That's it my friends. इतना छोटा कोड है और अभी आप इसको रन करो फिर से तो you will get all the MongoDB documents जितने भी आपने अभी इंसर्ट किए वो सारे दिखाई देंगे एज अ अरे
Done. Yes, sir. ओके, वर्क हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये देखो सारे डॉक्यूमेंट बने। अरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू गेट। इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट आईडी, नेम, एज, सिटी। तो अभी आप इसमें क्राइटेरिया भी यानी कि क्वेरी ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। जैसे कि एक काम करो, ये जो पर्सन डॉट नेम फाइंड है इसको कमेंट में डालो और उसी को कॉपी करके उसके नीचे पेस्ट करो, उसके नीचे यानी कि यहाँ, और यहाँ क्वेरी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। ओके, ऐसे तो कंसिडर यू वांट MongoDB document having age $GT। ओके, और मैं बोलता हूँ 20, यानी कि जिनका एज 20 के ऊपर है ऐसे MongoDB डॉक्यूमेंट, तो ये आपका क्वेरी ऑब्जेक्ट। यू कैन पास क्वेरी ऑब्जेक्ट लाइक दिस। डन। वर्क हो रहा है ये भी? Yes, sir. नहीं, तो देखो जिनका एज 45 के सॉरी 20 के ऊपर है वही रिटर्न, बाकी जीरो वाले में वही। अगर आप लेस देन बोलेंगे इधर जीटी की जगह, अभी इसी को आप कॉपी करो, इसी लाइन को कॉपी करो, इस लाइन को सिंगल लाइन कमेंट में डालो लाइन में, और उसके नीचे पेस्ट करो एंड एलटी बोलो लेस देन 20 लाइक दिस। आपको एलटीई चाहिए तो वो भी यूज करें, एलटीई लेस देन इक्वल टू 20। हाँ हाँ, तो ये देखो ये जीरो एज, दो ही है जीरो एज। अगर आप इधर 25 बोलेंगे शायद आपको कुछ ये भी मिल जाए। तो देखो एज जीरो और ये एज 22 नलिनी पाटिल। तीन रिकॉर्ड्स तीन डॉक्यूमेंट्स में सेम थिंग। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ, इसको अभी मैं कमेंट में डालता हूँ और यहाँ लिखो पी कैपिटल पर्सन डॉट फाइंड। ओके, एंड हियर सपोज आई से नेम, नेम $EQ, $EQ, और आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन नलिनी पाटिल ऐसा मैं बोलता हूँ, नलिनी पाटिल। तो नलिनी पाटिल के जितने भी रिकॉर्ड है वो रिटर्न हो गए डॉक्यूमेंट्स। ओके, तभी कंट्रोल सी देखो ये नलिनी पाटिल का रिकॉर्ड आ रहा है, तो EQ।
So here we can give all MongoDB commands. Hmm? Here we can filter records with all any type of MongoDB command. Correct? हाँ, क्वेरी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं. Okay. जितने भी क्वेरी ऑपरेटर्स आपने सीखे ना, हाँ हाँ. वो सारे यूज कर सकते हैं इधर. Okay. EQ, not NE, not equal to, less than, greater than, like this. Okay. Yes, yes. Okay. Similarly, person dot find. तो यहाँ consider city dollar regex. D. इसका मीनिंग क्या है? कोई बताएगा इसका मीनिंग? Starting with P. Correct, correct. City starting with P. Yes. Sir. तो देखो पुणे है एक ही, मल्टीपल्स. तो आप ये regex ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो. All operators you can use. Find method. Just a minute, sir.
डन, वर्क हो रहा है क्या ये? यस सर। तो ठीक है, तो आप ऐसे ये ट्राई करो घर पे, जितने भी हमने मोंगोडीबी क्वेरी ऑपरेटर्स यूज किए वो सारे ट्राई कर सकते हैं। अभी हम ओके अपडेट करते हैं, अपडेट इसको कमेंट में डाल दो पूरा। नाउ अपडेटिंग तो प्राइस सॉरी हम एज अपडेट करते हैं, अपडेटिंग मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट ओके यूजिंग मॉडल mongoose मॉडल। So again same person dot update, देखो you can use update one or update many. If you want to update many document you can use update many. If you want to update one document you can use update one. Now update को आपको मालूम है पहले query देना पड़ता है, यानी कि कंसिडर अभी मैं यहाँ कंपास में देखता हूँ तो मुझे कंसिडर ये दिनेश कुमार जो है इनका एज 23 है, ये अपडेट करना है। ओके तो नाउ आई विल से नेम ओके इन डबल कोट दिनेश कुमार ओके एंड कॉमा सेकंड ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं जिसमें डॉलर सेट होता है, डॉलर सेट एंड सेट में फिर सेट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी वांट टू अपडेट एज। तो एज मुझे कितना है अभी 23 ना 25 लिखना है एंड देन अगेन ये असिंक्रोनस कॉल है सो से डॉट देन में अगर आपको डेटा देखना है तो कंसोल डॉट एक डेटा यानी कि रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है रिजल्ट अपडेट रिजल्ट ओके देन कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट then dot catch and error console dot error like this. देखो ट्राई करके Sir, in result, there is one information upserted equal to 0. Upserted means, sir? सेटेड यानी कि अगर अपडेट नहीं करना है तो इंसर्ट करना है, यानी कि अगर ये नेम का अगर डॉक्यूमेंट नहीं है दिनेश कुमार नेम का राइट हाँ हाँ। तो वो इंसर्ट करेगा। लेकिन उसमें आपको अपसर्ट ट्रू ऐसा बोलना पड़ता है।
So where that option will come? Upsert true. थर्ड पैरामीटर. ओके, Okay, okay. यहाँ जो सेट है ना, यहाँ हाँ, आप अपसर्ट ट्रू ऐसा बोल सकते हैं. अभी ये अपडेट का ही हम देख रहे हैं. डोंट डू दैट. okay. तो कंट्रोल सी. और ये होता है क्या, अपडेट होता है. Yes, sir. ये देखो, ये रिजल्ट उधर भी आ रहा था ना हमें. ओके, इसकी बात करें ना, अपसर्टेड काउंट. अपसर्टेड यानी कि अगर वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं तो वो इंसर्ट करेगा, और अगर वो Okay. प्रेजेंट है तो अपडेट करेगा. अभी बोलो अपसर्टेड काउंट 0 है, मैच काउंट 1 है, मॉडिफाइड काउंट यानी कि उसको मिला वो डॉक्यूमेंट. आर गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. तो चेक करो यार कंपास में कि अपडेट हो रहा है. रिफ्रेश करो इधर. ओके, हाँ ये देखो 25 हो. सिमिलरली ये जो सेजल खन्ना है, इनका एज 0 है, तो उसको भी हम अपडेट करते हैं. यहाँ चेंज कर दो, सेजल खन्ना, और एज में बोलता हूँ 21. ओके, और रन करो. इसको फिर से रन करो. डन. हो रहा है. Yes, sir. ठीक है, तो ना हम डिलीट करके देखते हैं. कोई भी, ये भी हो गया ना अपडेट. हाँ, ये आ गया है. और अभी आप रिफ्रेश करके देखो. अभी देखो ये सेजल खन्ना 0 एज दिख रहा है. So now it is 21. Let's delete one of the documents. तो ये CRUD operations complete हो जाएंगे. पर्सन कमेंट लिखते पहले. डिलीट MongoDB document. Okay, via Mongoose model. P capital person dot delete one. और बस यहाँ क्वेरी ऑब्जेक्ट पास करना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ नेम. ओके, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट डिलीट करना है अकॉर्डिंग टू नेम, सिटी, व्हाटएवर. और अपडेट डिलीट वन बोलो तो एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट होगा. जैसे कि ये सूरज मेहता हैदराबाद, तो मैं यहाँ बोलता हूँ सूरज मेहता. हाँ, अगेन इट इज असिंक्रोनस कॉल.
तो ये डॉट देन एंड डॉट कैच ऊपर वाला जो है ना वो कॉपी करके पेस्ट किया तो भी चलेगा, वो सेम ही रहता है। हाँ, ये देन पार्ट और ये कैच पार्ट, लाइक दिस। Person dot delete one, name Suraj Mehta, then result whatever result of document operation. So record deleted successfully. Correct. Done. Should I proceed? So your CRUD operations we completed today. देखो, connected to MongoDB, acknowledge to deleted count 1, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट था वो, सूरज मेहता ना. So right now this document Suraj Mehta is here. अभी number of documents 7 दिखा रहा है. If I refresh, now it is 6. Correct? Yes, sir. स्क्रीन मेरा विजिबल नहीं है ना? Yes, sir. हाँ, एक मिनट, आपको मैं ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था अपसर्ड का, वो दिखाता हूँ. वो हम डेटाबेस के साथ करेंगे. Okay, sir. So that query can be solved. So right now we have time. So my friends, we have done how to perform operations with MongoDB. So tomorrow you will have mock interviews, right? Don't remain absent just for the sake of mock interview.
Yes, sir. And then we'll start with RESTful web service theory part. Concept understanding is very important. Sir, here by doing this code operation, we are already done with RESTful web API, no? No, no, we haven't done. We will have to learn RESTful web service, then we will create RESTful web API. Okay. We haven't done with that. So today we have just established the connection with database and हाँ, we just performing CRUD operations with data. ये REST API वगैरह नहीं था, वो अलग चीज होती. okay. वो हम आप देखेंगे ना कल. कंसेप्ट पहले समझ लेंगे theory part, हाँ, then हाँ. we will do coding. Okay, sir. हाँ, so it's not like that. ठीक है, just a minute. तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो अभी. And then let's establish connection with MongoDB using Mongo SH. वैसे UI से तो बहुत easy है. हाँ, is screen visible? Yes, sir. See here, Mongo SH MongoDB :/localhost 27017. That's it. I will say here show DBS. Then ये database 25A आपका MyDB होगा. तो univer case you please say use MyDB. I will say here Node.js 25A 131 PCH. That's it. Then I'll say show collections. So now db dot products dot find. तो प्रोडक्ट्स कलेक्शन के साथ हम डील करेंगे. तो अभी आपको ये दिखाना है कि अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं तो इंसर्ट होता है. ओके, यूजिंग अपडेट वन मेथड. अदरवाइज वो अपडेट होता है. जैसे कि हम देते हैं प्रिंटर HP 12,000. कंसिडर मुझे इसका प्राइस अपडेट करना है, तो मैं देखो कैसे देखता हूँ. सो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट वन सेट ऑपरेटर है ऑब्वियसली. अपडेट वन, तो पहले आपको क्वेरी यानी कि क्या अपडेट करना है. नेम प्रिंटर, ओके, एंड ब्रांड HP यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी. और अपडेट प्राइस करना है ना, तो यू विल से ऑब्वियसली $set कोलन एंड अपडेट क्या करना है, प्राइस करना है. तो अभी 12,500, तो मैं बोलता हूँ यहाँ 14,800.00. ओके, तो ये देखो अभी इंसर्टेड आईडी नल, अपसर्टेड काउंट 0, ये पहले भी आ रहा था. मॉडिफाइड काउंट 1, ओके, मैच काउंट 1. ओके, तो अभी मुझे कंसिडर अगर ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट करना है. अभी तो प्रेजेंट है, लेकिन मैं कुछ दूसरा ही डॉक्यूमेंट डालता हूँ यहाँ. मैं बोलता हूँ नेम, ओके, माइक्रोवेव ओवन. ओके, ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं. और इसका ब्रांड मैं बोलता हूँ ओके फिलिप्स. और इसका प्राइस मुझे यानी कि सारे वैल्यूज देने हैं, क्योंकि सेट तो पूरा करना है ना. तो नेम, वो सेम नेम माइक्रोवेव ओवन, ओके, कॉमा ब्रांड. और क्या दिया मैंने, फिलिप्स. ओके, तो db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट वन, ओके, नेम माइक्रोवेव ओवन, ब्रांड फिलिप्स. और मैं सेट कर रहा हूँ पूरा डेटा. अभी मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ. देखो मैच काउंट 0, ओके, मॉडिफाइड काउंट 0, अपसर्टेड काउंट भी 0.
इंसर्टेड आईडी नल, यानी कि कुछ भी अपडेट नहीं हुआ ना इंसर्ट हो। तो अगर ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, मेथड है अपडेट वन, बट इफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंट एंड यू वांट टू इंसर्ट इट, देन एक यहाँ ना और एक थर्ड ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, यहाँ थर्ड पैरामीटर, और उसमें हम यूज करना है ओके डॉलर अपसर्ट is equal to true. This meaning you are explicitly telling to the update one command, if this data is not present, then please insert it as a new data. Okay. नहीं आया, जस्ट मिनट, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साइड। लेट मी चेक। तो ये पैरामीटर बराबर है on my side। हाँ सॉरी, डॉलर नहीं है, सिर्फ अपसर्ट बोलना है। हाँ, यहाँ माइक्रोवेव ऑन ब्रांड फिलिप्स डॉलर सेट नेम माइक्रोवेव ऑन ब्रांड, हाँ comma opening closing curly brace, simply say upsert, it is not dollar upsert, is equal to true। okay, and now you can check here upserted count 1, और अभी देखो inserted id null नहीं है, यानी कि नया रिकॉर्ड आ गया। आप यहाँ कंपास में जाके देख सकते हो। तो मेरा केस ये प्रोडक्ट्स में अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो सबसे एंड में ओके ये देखो फिलिप्स माइक्रोवेव और ये प्राइस 14,800। So just you have to pass this upsert true as a third parameter. Okay? करके देखो यार। तो आप ये वहां से भी कर सकते हो, जो आपने अभी मोंगोडीबी का प्रोग्राम किया था एक्सप्रेस के थ्रू, वहां से भी बस ये थर्ड पैरामीटर, लेकिन डेटा नया होना चाहिए, यानी कि कोई मैच नहीं होना चाहिए। तो क्वेरी में जो पास कर रहे, so fine friends, so if you have done this, we'll stop here for today. Okay? ये हो रहा है क्या अभी अजित? Sir, Pradeep here. I have one question. Yes, sir. Yeah. Can I tell you? Yes, I'm listening. Yeah. Before we create the server, we have configured the .env for access the environment variables. But I think in dbconfig file you written process.env to access that variable. So where we can use .env module to access Where? the variables. .env method where we can use to access the environment variables. Wherever it is required. Okay. Which method you are talking about? कुछ समझ में नहीं आया। ये आपने फाइल बनाया, right? Right. These are environment variables, port 4000, DB Yes. URL. Yes. Now how to in read dbconfig, this? in dbconfig. Correct. In the dbconfig, we have read environment variable by calling this method. Okay. Yeah. See here, this method. But if you don't call this method, it will not work. Okay. So to access process.env.db URL, we have to call that method is okay. Correct. Means before accessing process.env and something from that .env file, you must call .env.config wherever it is applicable. It's not necessary that you should call it here. Okay. अभी हमने यहाँ क्यों कॉल किया, तो हमारा फ्लो देखते हैं हम। देखो हमने क्या किया सर्वर में, ओके हम इधर आते, तो हमने देखो यहाँ एक्सप्रेस ऐप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुरंत ये मेथड कॉल किया, राइट? Yes, right. inside this method we have called dbconfig, right?
वो जो .env.config कॉल किया ना हमने, so then it has read already, तो आप यहाँ भी कॉल कर सकते हो in the beginning. So here Okay, sir. this is main server. So if you think that it is applicable here, so import that .env and you just say db config db .env.config, यानी कि ये लाइन आप उधर भी डाल सकते हो, ये इंपोर्ट करके पैकेज उधर. तो wherever it is applicable, यानी कि before you first time access process.env.any environment property, you must call this .env.config. That's it. Okay, sir. Understood? Okay, got it. Yeah, understood. Correct. Anybody has any doubt? Fine, friends. See you tomorrow. Let me take attendance.